So greetings everyone. Welcome to the LitFest 2023. We have with us today an esteemed guest, Dr. Satyajit Kuchar, MD, Homeopathy, and a well-known poet. Welcome, Dr. Kuchar. It's an honor and delight to have you with us today. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you. So before we get to know more about you during the discussion and the session, where we hear a lot about your work, both in your profession and your passion, that is creativity. So we would like to quickly give an introduction to everyone who would be watching us and joining us, so that they get to know all about all the incredible work that you do, both in your profession as a homeopathy and also as a writer. So with your due permission. Dr. Satyajit Kuchar has been a practicing homeopathy for 7 years. His thriving practice sees 80 to 100 patients a day. In the year 2020, he authored a book on homeopathy titled Widening Horizons in Study of Homeopathy. His second book is expected to hit the market very soon. His articles on homeopathy and cured cases have been published in various reputed journals. Apart from writing on homeopathy, he writes poems and quotations in English, Hindi, and Marathi. He's a passionate hobby horse musician. He owns and plays various musical instruments like guitar, keyboard, flute, and much more, which we will get to know more about during the discussion. He has also worked as a Marathi voice artist. His poems and writing have been published in various anthologies. Kaleidoscope, his collection of poetry and quotes, has also been published. So congratulations for all that incredible work that you have already done and you intend to do further. And with that, we welcome you all over again. It's a great pleasure to have you with us. Thank you. Thank you so much for such a warm introduction. In fact, it's a pleasure to get interviewed by you. Thank you. It's an honor. So as we have already heard so much about you and the introduction that we had right now about all the incredible work, so that bifurcates your writing and profession as an homeopathy practitioner and also as a poet. So tell me, from the passion of homeopathy to the creative world of writing, what inspired this transition? Whenever I see personalities who are like multifaceted personalities, they are artists as well as they are good at their profession. I always feel that different facets are only expression of the same personality. Like you can see the same thought pattern, you can see the same values in expression. These different facets of one personality or these different dimensions are only the expression of one personality. For example, I like writing, I like expressing myself. They say na ki live life to express and not to impress. True. Even my homeopathic writings, even like for example, my father is a homeopath, my grandfather is a homeopath, uncle aunt, they are homeopaths. Like if I get very nice results in some case, I would be very happy to express. So आज today such patient came and he gave such an overwhelming feedback and he brought so many referrals. So there's a lot of joy in expressing and sharing. So the homeopathic writings as well as the non-homeopathic writings are like uh, a medium of expressing oneself and sharing what I feel worth sharing, or what is thought provoking, or what is so intellectual, or what is so worth reading, what is so uh, worthy of that it should be thought over again and again, or what it should be implemented. So homeopathic writings as well as non-homeopathic writings are just sort of expression what I feel everything is worth sharing and worth pondering over. That's wonderful. And with that thought, since you discussed about expressions, so holding on to that beautiful thought, I would like to ask, how do you use poetry as an element to express your thoughts and emotions? Poetry isn't thought like just uh, whenever I thought of expressing something, like I'm very expressive in very close interpersonal relationships, and where I'm not expressive, you may take it for granted that relation is just a formality for me. I'm very expressive as an individual,
when you wish to express something for someone, you may either you may dedicate a certain song for someone, or you may choose a greeting card which contains the matter which suits that particular person or which suits particular interpersonal relationship. And when it comes to me, I think I should write some poem for someone, or I should. That's a natural form of expression. For example, uh, be my father. So if I, because I'm also homeopath and he's also homeopath, now I know, because if I were not a homeopath, I would have said that yes, I'm a very proud son, that I'm very proud that my father is such a successful doctor. He's a role model for so many people. But because I am also a homeopath, I know what are the hardships of being a homeopath, or what are the hardships of being a doctor, or what are the pros and cons, and what are the various uh, thoughts, emotions, and what are the different like challenges and the privileges of being a doctor. So whenever I have something to express, I think I can pen down it in the form of a poem. Like Yes, like that we so many times we wish to express our feelings for someone, be it friends, family, or like teachers, or so many a times people use poetry written by others. So I thought, why not use poetry written by myself? Regardless of the caliber of the poetry, the biggest USP should be it is written by myself and it has my own feelings. that's And what happens, like something various emotions that we go through, various phases of life. So just as we share feelings with our loved ones, or with our like people whom we are comfortable, or with whom we are ourselves, people, we know that this person won't be judgmental, this person will like in front of this person I can pour my heart out. So sometimes when uh, uh, I had written a poem, Swan, the loyal swan. uh, I read we are somewhere that swans are so loyal, and they are so attached to their spouse, or they are so attached to their partner. If their partner dies, a swan can die of a heartbreak. So to express, the emotion has to hit you. If emotion doesn't hit you, you cannot write. So otherwise it will be a technical writing without a soul. Yes, you can like आप जुगाड़ कर सकते हो शब्दों का. Yes, you can play with words with your intelligence and intellect, but that writing won't have any soul if some emotion doesn't hit you. When I'm sad in life, or when I'm like searching for certain answers, like some rhymes, some thoughts, they like a loop, like a whirlwind, they are like circling in my mind. And like when I sit in some sort of pondering mood, or uh, pensive, or a meditative mood, I can like pen down in the form of poetry every emotion, be it happy, be it sad, be it thoughtful, be it angry, every emotion finds its expression in form of poetry. For example, some people may say that for example, there's a software engineer. For his bread and butter, he's like, for his bread and butter, for his living, he's a software engineer. But as soon as some foot tapping number starts, his feet start moving. So like, and there is a natural inclination what everyone has. For example, a person may take formal training in singing or not, but he has a natural inclination to sing. In family functions and social functions, he or she may like to sing. So I have a natural inclination to write, regardless of the quality. I like to express it, and it comes naturally. For example, when A.R. Rahman won the Oscar award, I thought I should write a poem for him out of nowhere, and I know that I never in my life I'll get a chance to meet him, but that is my form of expression, and those are my feelings, which seek an expression in the form of poetry.
Yes, very wonderfully said. And that beautiful thought again. कविताएं दिल से निकलती हैं और दिल तक पहुंचती हैं. And a writer finds inspiration in everything in and around. So as you said, जैसे आपने कहा कि ए आर रहमान जी को देखकर you wanted to write, you were inspired to write, and of course you would be meeting him someday. We hope to see that, and he also appreciates your poetry. So that's very beautiful. So thank you for putting that across. And that brings me to my next query. As you have already mentioned that about your writing in homeopathy and writing, creating something completely unique, as in poetry or stories or quotations. So, what is the difference between the two process when you are writing something related to your profession and when you are writing something for your passion? Yes, like writing, like both sort of writings in we can use very ornamental words, very like figures of speech, or like we can use the literary elements to decorate our writing in both formats, homeopathic as well as non-homeopathic. But when I write something in homeopathy, my sole aim is to convey my thought, or the reader should understand the concept very well rather than using the decorative literary elements, because I don't want uh, I'm writing so that the student or a young doctor should get some concept uh, cleared. Like I read this article, and this article made my concept clear, which was not clear for years together. If some student or reader says that I'm most satisfied, then I don't focus when I'm writing in homeopathy. I don't focus on using some jargons or idioms which are difficult to understand, because the concept itself is very difficult to understand. Why to complicate it with complex literary elements? So I try to make it lucid as far as the homeopathic writing is concerned, and uh, and as far as non-homeopathic writing is concerned, I think let's unleash oneself using all the literary jargons, the idioms, the figures of speech. Like literature is all about the beauty of this of the literary elements, right? Yes. Rightly said. Because when you're writing something out of your profession, it has a framework, basic framework. And of course, when you create something unique, that is unbounded, as I understand from what you're saying. Yes. You can correct me anytime. No, Yes. no, no, no. You got it very apt. That's wonderful. So, since we are talking about poetry and we all love to hear poems, as we said, बातें दिल तक पहुंचती हैं बहुत जल्दी as compared to stories. It's the poems that reach the audiences and connects with them as quickly as possible. So, would you like to recite a few lines from your poetry and the large and huge collection that you have written? So, we would love to hear some of Sure. them. I'll recite the Loyal Swan. A bird so committed, the snowy white swan, up to dusk of life, from life's dawn, leads life with one partner along, and forms a bond such strong. If the demise of one partner ever makes them apart, the other might even perish of a broken heart. Wow, That's it. that's So the beautiful. only the thought, because that emotion hit me, that's why I could pen down the poem. If that emotion won't have hit me, Loyal Swan won't be there in my writings. It's a beautiful emotion. Yes. And very rightly put in beautiful words with the literary elements as you had mentioned earlier. So has this poem been published somewhere? Is it from your book? Yeah, it has been published in the Kaleidoscope collection. Okay, great. Yes. That does give a glimpse to the world emotions. So wonderful. Thank you for those beautiful lines. And Thank you so also, much. yes, from your profile, we understand that you are a passionate musician and writing and homeopathy, all different things, different walks of life. So tell us, how is music similar or different than writing a piece of poetry? Mm, Technically, you may see various parameters to compare or what are the differences. But poetry, and since times immemorial,
poetry and music have had a very successful association, or some people may call it they have had a very successful partnership, or they Yeah. have had a very successful marriage. Because Yes. even in, if I'm not wrong, in North India, what they call chand, they like recite it in a like musical manner. They recite it, Yes. so it's very sometimes a very good poetry form finds a good complement in a good tune, in a good melody, and a good melody is always incomplete without some meaningful words. So Yes. this is, and we see so many uh, musicians who write good lyrics. We see so many singers. We see very handful of people who are like amalgamation of all three. They write as well, they compose as well, they sing as well. Uh, I if I'm not able to recall. Uh, a person visually challenged who worked with lot with. Uh, I'm not able to recall his name. Like वो लिखते भी थे, वो कंपोज भी करते थे, वो खुद के गाने गा भी लेते थे. So People. it's Yes. they both complement each other very well. Like and not only poetry and music. There is some relationship between poetry and painting also. Like I I don't remember who said this, but people say that a painting is a poem without words, and poem is painting devoid of colors. That's great. Yes. Every creative element Yes, but has when connection with one another. Yeah. Sorry. Please continue. oh no, I'm sorry, but when it comes to expressing oneself, sometimes you uh, sometimes one doesn't need to learn to write. Sometimes uh, uh, you have to have that basic rhyme sense, or you have to have that basic tendency to feel emotions and to pen, and you need to have that inclination to pen down, and that it can be refined by more uh, reading more and listening to good people, and like understanding the technical elements and understanding the technical nuances of poetry. It can be polished, but basically it has to be there. But when it comes to music, music requires altogether different skills, because unless and until you were a musician in the past life, it doesn't happen that you are like uh, I saw this instrument and I could play it. Like you need to learn that, you need to condition yourself, that you need to learn unlearn many things to express yourself musically. But you need not learn that to express yourself in terms of poetry. Some True. people are endowed with those qualities. True. For example, if I want to play a guitar, so it doesn't happen that I can. So it's very impossible. It's very practically very difficult to learn playing a guitar without a guru, and like you need to master. You need to condition yourself. You need to imbibe certain skills. Even though you may say that this beautiful melody has been haunting my mind, and I'm damn sure that I have not copied it from somewhere. I have not heard it anywhere else. It's purely my own. This haunting melody has been this melody has been haunting my mind. But when it comes to playing it, I need to learn to play. I can ask someone to play it for me, but I can play it myself unless unless and until I learn that instrument. So this is the difference between expressing oneself as far as poetry is concerned and as far as musical instruments are concerned. Very true. And as you said, poetry and music are like they go hand in hand. They have some connection. Also in Bollywood, as you mentioned, and of course we know that chemistry of music and poetry is seen very evidently. So how Bollywood impacts your writing, or do you get influenced by the Bollywood? Uh, right, Bollywood is the most easily accessible thing which we have in our lives, and hardly we find any individual who doesn't see movies, or who doesn't has some memories or some emotions connected with Bollywood. And because we have such great lyricists in Bollywood,
And for example, like we were taking the element from the previous question ahead, the relation between music and poetry. I heard Javed Akhtar Saab saying that uh, Bollywood, mein, I'll use some Hindi also because I think some expressions or some thoughts can be justified in Hindi. Uh, Bolly- जावेद अख्तर साहब को मैंने ये बोलते हुए सुना था कि कई बार ऐसे होता है कि बॉलीवुड में धुन पर आपको लिखने को बोला जाएगा, लिखने को कहा जाएगा। एक अच्छी धुन तो हमेशा इंस्पायर ही करती है कुछ अच्छा लिखने के लिए। और क्योंकि जावेद साहब ताउम्र शब्दों से खेलते रहे, तो उनकी जो टेक्निकल एलिमेंट्स की जो समझ है, वो भी मैं कुछ समझ के अपने आप में इम्बाइब करने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने कहा था कि अगर आप खुद भी लिखें, आपको ट्यून ना दी जाए, आप खुद भी लिखें, तो आपका जो मीटर बंध गया है पहली लाइन लिखते-लिखते, वही मीटर के हिसाब से आप आगे का आगे का पूरा राइटअप लिखेंगे। चाहे वो धुन आपके लिए कोई और चुने या वो पहली लाइन का मीटर आप अपने आप के लिए चुने। वो तो बन गया है और आप उसी के हिसाब से लिखोगे। और हम खुद और जितने भी पोएट्स हैं और राइटर्स हैं और खास तौर पर पोएट्स हैं, वो इस चीज़ को बखूबी समझेंगे कि हम जब कई बार पहली लाइन लिख देते हैं, तो वो हमें वही अच्छी लगती है या उसके अलावा कुछ और अच्छा नहीं सूझता। तो हम ट्राई करते हैं कि सब उसी के हिसाब से अब आगे चले। अब उससे कुछ अच्छा लिखना है तो पहली लाइन ही ऑल टुगेदर बदल देनी पड़ेगी। एंड and we have such great lyricists and poets and such ghazal writers and nazam writers. Maybe some uh, literary stalwart will be able to like tell you all the subtle differences between all those poetic forms. But I what I what I look up to what I look up to Gulzar Saab. I look up to Anand Bakshi Saab. There I look up to Majroo Sultanpuri Saab. Like once again the connection between music and poetry. एक मैंने कुछ ऐसे सुना था कि मजरू सुल्तानपुरी साहब के पास कोई आया कि तब मैं लिखता हूँ और मुझे फिल्मों में किस तरीके से एंट्री मिल सकती है। तो मजरू सुल्तानपुरी साहब ने उनके सामने कोई गाना प्ले किया और वो गाना प्ले करने के बाद उन्होंने कहा मजरू साहब ने उनका रिएक्शन ऑब्जर्व किया, तो वो कुछ गाने से ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो फिर उन्होंने मजरू साहब ने कहा कि आप लिखते अच्छा है, आप नॉन फिल्म वर्क जरूर अच्छा करिए, फिल्मों में शायद आप उतने अच्छे ना लिख पाए बिकॉज आप वो मेलोडी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। तो जो आपने सवाल पूछा था ना, हाउ म्यूजिक एंड पोएट्री आर रिलेटेड, मैं आनंद बख्शी साहब से बहुत मुतासिर हूँ। मैं आनंद बख्शी साहब जो लिखते थे, मैंने एक किसी इंटरव्यू में सुना था किसी को कहते हुए कि अलग अलग मूवीज में जो कैरेक्टर्स होते थे और जो कैरेक्टर्स की सोच होती थी, वो सोच को लेकर वो पूरी की पूरी पोएट्री लिखते थे। तो इसका बेस्ट एग्जांपल, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल जो परदेश मूवी में लगता है, जो महिमा चौधरी का जो कैरेक्टर, बहुत सिंपल सी छोटे गांव की लड़की जो अपनी मिट्टी से प्यार करती है, वतन से प्यार करती है और इंडिजिनस वैल्यूज, बहुत ही फैमिली वैल्यूज और बहुत जिसे आजकल थोड़ा ओल्ड स्कूल कहा जाएगा, लेकिन वो वैल्यूज उस जिसको पोर्ट्रे करती है वो, और जिस तरीके की फ्रेंडशिप निभाती है। एक गाने में है कि ये किस्से सभी को बताते नहीं है मगर दोस्तों से छुपाते नहीं है, तेरे दर्द दिल की दवा हम करेंगे, ना कुछ कर सके तो दुआ हम करेंगे। या फिर म्यूजिक सिंगिंग से लेके उसका जो है कि सात सुरों का सरगम ये जीवन गीतों की माला, हम अपने भगवान को भी कहते हैं बांसुरी वाला। या एक वो लाइन है कि अ, जिस जिस देश में मेरे पिया उस देश में मेरा जिया, कितना मुश्किल है दिल का लगाना परदेस आना। और एक वो गाना है कि नहीं होना था तो फेंक दी गली में मैंने झूठी रस्मों की अंगूठी। तो वो जो जो मैरिज था वो तो उसके साथ था नहीं, because she found some connection with Arjun, some Shahrukh Khan, but not with Apurva Agnihotri. So it was like the marriage of झूठे रस्मों की, that अंगूठी was झूठे रस्मों की अंगूठी for her. So वो कैरेक्टर को की सोच को समझ के आनंद बख्शी साहब ने कितनी खूबसूरती से उसको पूरा बयां किया है। मैं और गुलजार साहब, जब उनका सत्या में एक गाना है गोली मार भेजे में, तो मैंने गुलजार साहब को भी बोलते हुए सुना था कहीं कि एक पाबंदी राइटिंग में कहीं ना कहीं होती है जहां आप
कहानी के परे नहीं जा सकते, आप किरदार के परे नहीं जा सकते, किरदार की सोच के परे नहीं जा सकते। अब कोई गैंगस्टर तो यही गाएगा गोली मार भेजे में, वो तो ये नहीं गाएगा कि ए दिले नादान तुझे हुआ क्या है, बता दे इस दर्द दिल की दवा क्या है। और Correct. साहिर लुधियानवी साहब कितना खूबसूरत लिखते थे। साहिर लुधियानवी साहब ने किसी जमाने में लिखा था कि एपिक कल्ट क्लासिक फ्रॉम लेजेंडरी गुरुदत्त, जो प्यासा के लिए उन्होंने लिखा था, ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या। तो एक और डॉक्टर और पोएट डॉक्टर तुषार शाह जो लाफ्टर चैलेंज में आए थे, उन्होंने कुछ अपना रेंडिशन बनाया था, और फिर मैंने भी लिख दिया था, ये हिपोक्रेसीज, ये डबल स्टैंडर्ड्स, ये प्लास्टिक स्माइल्स की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या, ये अतरंगी फैशंस और बेढंगी स्टाइल्स की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या हो। Thing which one can have, and so many of our emotions are connected with Bollywood. So many of us have crushes on some hero or heroine. We have so many like friendship per movies हो वो हमारी फेवरेट है, देशभक्ति की मूवीज हो वो हमारी फेवरेट है। तो बॉलीवुड से बहुत इजीली कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग, और इजीली एक्सेसिबल है वो, और क्वालिटी काम भी होता है उसमें, तो दैट्स। बिल्कुल, बिल्कुल। और लेजेंडरी वर्क्स जितने आपने अभी बताए वो तो क्वालिटी वर्क ही हैं जो एंड वी लर्न फ्रॉम द लेजेंड्स एंड बॉलीवुड एज़ यू राइटली सेड हैज़ write song and poetry and music for every emotion and every situation. So, yes. इमोशन, चाहे वो लक्ष्य का टाइटल सॉन्ग हो या और कोई मोटिवेशनल सॉन्ग्स की बात करें, तो कितने लोग अभी भी आप कोई लक्ष्य का टाइटल सॉन्ग अगर आप देखेंगे तो वहां लिखा रहेगा कि द एंथम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। True. Yes, yes, यस। right. And there has to be a soul. That's important and wonderफुल। So coming to your book Kaleidoscope, काफी इंटरेस्टिंग टाइटल है और वो सुनते ही एक इमेजिनेशन आ जाती है, रंग बिरंगी दुनिया एक जो हम, तो क्या इसमें रंग बिरंगे इमोशंस हैं या क्या है? वी वुड लाइक टू नो मोर अबाउट योर बुक कलाइडोस्कोप। रंग बिरंगी दुनिया, कलाइडोस्कोप ये वर्ड मुझे बहुत पसंद है। पहले बुक के बारे में मैं बताता हूँ और बाद में ये वर्ड मुझे इतना क्यों पसंद है मैं बताता हूँ। राइटर्स ग्राम नाम का एक हाउस है, राइटर्स ग्राम नाम का एक पब्लिशिंग हाउस है। वो कुछ ऐसे छोटे छोटे कुछ लाते रहते हैं, क्रिएटिव एवेन्यूज एंड क्रिएटिव प्लेटफॉर्म्स फॉर राइटर्स, फॉर बडिंग राइटर्स। तो उन्होंने इंस्टेड ऑफ अ बुक, सम कार्ड्स on which poetry and quotes can be written, some 25 to 30 cards, उसका एक रहेगा कलेक्शन, उसका बड़ा एक डेकोरेटिव पैकेजिंग बनाएंगे वगैरह। ऐसा उनका कुछ, ऐसे कुछ उनके वेबसाइट पे आई आई हैपन टू स्टम्बल अपॉन देयर वेबसाइट। मुझे लगा अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म। इंस्टेड ऑफ the tedious procedure of writing an entire book, this is somewhat relatively less tedious procedure। जो एक्सप्रेस करना था वो मटेरियल तो है ही मेरे पास, बस उस उनके फॉर्मेट में उसको ढाल देना है। कलाइडोस्कोप इसलिए क्योंकि कलाइडोस्कोप का एक सिंपल मीनिंग होता है डाइवर्स कलेक्शन। उसके नाम के ही तरह उसमें पोएट्री के बारे में भी है, म्यूजिक के बारे में भी है, सेल्फ मोटिवेशन के बारे में भी है, सेल्फ हेल्प के बारे में भी है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में है, रिलीजन के बारे में है। तो ऐसे डाइवर्स टॉपिक्स उसमें कवर किए हैं, थोड़ी सी पोइट्री और बहुत ज्यादा कोट्स है उसमें। तो कलाइडोस्कोप, और कलाइडोस्कोप जब हम, जैसे आप क्योंकि आप खुद राइटर है, तो आप रंग बिरंगी दुनिया आप उस वर्ड से कनेक्ट कर पाई। नहीं तो जो आम तौर पर कलाइडोस्कोप वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, बच्चों को देखने के लिए देते हैं, उसमें कलर चेंजिंग पैटर्न्स हमेशा रहते हैं। और कलाइडोस्कोप जब से मैंने ये वर्ड सुना वो मुझे बहुत हिट करता है, मुझे बहुत फैसिनेट करता है, क्योंकि हर चीज में कलाइडोस्कोप है। आपकी अपनी खुद की पर्सनालिटी ले लीजिए, जितने रोल्स आप सुबह सुबह जब उठती है तब से लेकर के जब तक आप रात को सोती है, तो कितने अलग अलग रोल्स आपको प्ले करने पड़ते हैं, या एक वुमन को जितने अलग अलग रोल्स प्ले करने पड़ते हैं, चाहे वो खाना पकाना हो, चाहे वो हाउस होल्ड कोर्स हो, चाहे आपका अपना प्रोफेशनल वर्क हो। वो एक कितना कलाइडोस्कोपिक वो है, कितना चेंजिंग पैटर्न, कितने पैटर्न्स चेंज करते हैं। एक इंडिविजुअल अपने आप में चलता फिरता कलाइडोस्कोप है, जो सवेरे उठते से ही हम रात को जब तक सोते हैं तब तक हमारे साथ दिन भर में जो होता है वो अपने आप में कलाइडोस्कोप है।
कितने पैटर्न्स चेंज होते हैं, कितने अलग अलग इंडिविजुअल से हम मिलते हैं, वो अपने आप में कलाइडोस्कोपिक है, क्योंकि वो पैटर्न्स चेंज होते रहते हैं। और ये मैं थोड़ा सा पोइटिक और फिलोसॉफिकल वे में आपको बता दिया। अगर मैं मेरे प्रोफेशन में भी देखूं, तो जो मल्टीपर्पज दवाइयां होती है, फॉर एग्जांपल एक दवाई है जो 4 अलग-अलग बीमारियों पे चलती है, और किसी दिन और वन फाइन डे ऐसा आ गया इंसिडेंटली कि एक दवाई XYZ नाम की दवाई ABCD अलग-अलग बीमारियों पे चलती है, और किसी फाइन डे वो ABCD अलग-अलग बीमारियों के मरीज आ गए। तो उस दिन मुझे मेरे ओपीडी में मुझे कलाइडोस्कोप देखने मिल जाता True. है। Very और और एक ही बीमारी है, डायग्नोसिस एक ही है, लेकिन इंडिविजुअल सिम्पटम्स हर किसी के अलग-अलग हैं। हर किसी की इंटेंसिटी अलग-अलग है। true. True. कोई उसको कोई अपनी बीमारी को किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, उसका रिएक्शन भी कलाइडोस्कोपिक है। True. True. अब अब कोई कोई बूढ़ा आदमी भी बोलेगा, अभी आई आई एम एजिंग ना, कुछ ना कुछ तो बॉडी में होगा ना। 60 साल की उम्र में बॉडी वैसी तो नहीं रहेगी जो 20 साल की उम्र में है। और ये उसको लेने का तरीका भी अलग है, और कोई कोई ऐसा ले लेगा जैसे पता नहीं आसमान टूट पड़ा। मैं तो कई बार बोलता हूँ, ये तो HIV और एड्स वाले लोग भी जीने की उम्मीद नहीं छोड़ते, आपको या छोटा सा हो गया तो क्या आसमान थोड़ी टूट पड़ा। दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छे से आपने समझाया कि हर जगह कलाइडोस्कोप है एंड वी जस्ट हैव टू गो थ्रू दैट एंड एंजॉय द प्रोसेस। तो मूविंग ऑन टू आपकी जो अपकमिंग बुक है उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे, और आपका जो वॉइस आर्टिस्ट का रोल रहा है मराठी का, फिर लैंग्वेज का क्या, तो ये सब हम जानना चाहेंगे। और समय थोड़ा कम है तो हम चाहेंगे हम जल्दी जल्दी सारी बातें आपसे जल्दी जल्दी सुने। से आप करें। जी, तो आप अपनी अपकमिंग आ, के बारे में बताएं। मेरी 2 बुक्स आ रही हैं, दोनों होम्योपैथिक है। एक मैं सोलो ऑथर कर रहा हूँ, एक मैं को ऑथर कर रहा हूँ मेरे वन ऑफ माय मेंटर्स के साथ। एक जो बुक है वो जनवरी एंड तक आ जानी चाहिए। हाउ टू रीड एलन की नोट्स के ऊपर है। तो फॉर एग्जांपल बहुत बड़ी-बड़ी बुक्स होती है, फॉर एग्जांपल कोई फिजिक्स की बुक है कोई, फॉर एग्जांपल, लेकिन उसको किस तरीके से पढ़ना है ये भी अपने आप में एक चीज होती है, उसके ऊपर कोई नहीं बात करता। करेक्ट। फॉर एग्जांपल कुछ अथॉरिटेटिव बुक्स होती है किसी फील्ड में। तो एक अथॉरिटेटिव बुक है हमारी फील्ड में एलन की नोट्स। जो अथॉरिटेटिव बुक्स होती है वो कई बार इमॉर्टल होती है, तो उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ये तो हर कोई बताएगा बताएगा आपको, हर कोई मेंटर आपको बताएगा इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, इसको नहीं पढ़ोगे तो कुछ चीजों को कभी समझ ही नहीं पाओगे, ये सब लोग बताएंगे। लेकिन पढ़ना कैसा है ये बहुत कम लोग बताते हैं। उस चीज को बेसिकली पढ़ना कैसे है, इसके ऊपर वो पूरी बुक है जो मैं सोलो ऑथर कर रहा हूँ वो। और जब मैं और एक बुक जो मैं को ऑथर कर रहा हूँ, जो होम्योपैथी के फाउंडर थे, तो उन्होंने वो परपेचुअली अपने आप को इम्प्रूव करते गए। तो उनके जीवन के आखिरी कुछ सालों में उन्होंने बहुत कमाल का रिसर्च किया, और उनका सबसे बड़ा रिसर्च उनके आखिरी कुछ सालों में आया। और कुछ होम्योपैथ्स, कुछ डॉक्टर्स आज भी उससे वंचित हैं। तो वो उजागर होना चाहिए होम्योपैथिक फ्रैटर्निटी के सामने। तो वो हम दोनों को ऑथर करके होम्योपैथिक फ्रैटर्निटी के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी अच्छे टॉपिक्स हैं, एंड आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन हु विल बी वाचिंग दिस शो टू जस्ट वेट फॉर दोस टू बुक्स एंड डू रीड दोस, एंड वेदर दे आर इन होम्योपैथी और नॉट, दे विल गेट टू लर्न सो मच फ्रॉम, एंड आल्सो ऑल योर पोएट्री बुक्स। तो और हम ये जानना चाहेंगे कि लैंग्वेज का क्या, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, बिकॉज यू राइट इन ऑल थ्री लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी। तो क्या रोल है लैंग्वेज का व्हेन यू ट्राई टू एक्सप्रेस? लैंग्वेज का रोल तो बहुत ज्यादा है मैम, क्योंकि जो हमारा मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, शायद वो हम किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, या हमें किस लैंग्वेज में वो इमोशन हर्ट, क्या क्या वो इमोशन हर्ट हुआ, और क्या हमें स्पॉन्टेनियसली किस लैंग्वेज के वर्ड्स, जार्गन्स, ईडियम्स वो हमें सूझे, इसीलिए हमने तो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में पेन डाउन कर दिया। लेकिन हमारी टारगेट ऑडियंस जो है ना, जो टारगेट ऑडियंस जो लैंग्वेज को समझती है, हम हमें उसी के हिसाब से ढालना पड़ता है। और इसीलिए ट्रांसलेशंस भी इतने आजकल हम देखते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में। और एक चीज मुझे देख के बहुत ये लगती है कि पॉलिटिकल इंग्लिश का डोमिनेंस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है, और इंग्लिश हमें कनेक्ट करती है आपस में, वो बहुत अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंगाली साउथ इंडियन से बात कर पा रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ इंग्लिश। क्योंकि क्योंकि फॉर सम रीजन और द अदर दोनों ही
हिंदी में उतने फ्लुएंट नहीं है, ऐसा एक स्टीरियोटाइप है। ऐसा एक स्टीरियोटाइप है कि people from the northeast and people from the south are not that comfortable with Hindi, so English connects them. तो उस सेंस से वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन पॉलिटिकल डोमिनेंस, पॉलिटिकल स्लेवरी 1947 में खत्म हो गई थी, लेकिन कल्चरल स्लेवरी में हम आज भी जी रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी इंडिविजुअल आता है और बहुत फर्राटेदार इंग्लिश में बात करता है तो हम उससे हमारी आंखें चौंधिया जाती है, और वही जब अपनी मातृभाषा में बात कर रहे हैं तो हमें लगता है ही सो डाउन मार्केट, इज नॉट दैट कंफर्टेबल इन इंग्लिश। ये आज भी हमें लगता है, तो ये सांस्कृतिक गुलामी नहीं है तो और क्या। नहीं, बहुत तो अच्छी बात कही आपने। कभी यस, सॉरी। यस। जी, आप कुछ कह रही थी, आप कुछ कह रही थी। एक बहुत अच्छी बात कही आपने, और बहुत इंपॉर्टेंट बात, थॉट प्रोवोकिंग, एंड दैट कैन कम ओनली फ्रॉम अ मल्टी फेसेटेड पर्सन एंड एन आर्टिस्ट। तो हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि मराठी वॉइस आर्टिस्ट, समय हमारे पास एक्चुअली बहुत कम है अभी, द क्लॉक इज टिकिंग, दैट्स व्हाई आई हैव टू ठीक है। सॉरी। तो या मराठी वॉइस आर्टिस्ट का आपका कैसा रोल रहा है, और your final words to budding writers? So if you can just combine the two and you can quickly give a recap on the board. यस। मैंने जैसे कहा ना कि पोइट्री मेरे लिए एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो वैसे वॉइस ओवर कह लीजिए या नरेशन भी, वो भी मेरे लिए एक सॉर्ट ऑफ एक्सप्रेशन है। उसमें जो वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, उसमें जो डिक्शन और एक्सेंट होता है, वो भी मेरे लिए एक मीडियम। मैं हमेशा फैसिनेटेड रहा हूँ कि कैसे वॉइस ओवर या डिस्कवरी चैनल में जो वॉइस ओवर था, मुझे पता भी नहीं ये जिसने नरेट किया है, उस बंदे का नाम क्या है। उस बंदे की मैंने कभी शक्ल भी नहीं देखी, लेकिन आवाज मुझे बहुत फैसिनेट करती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो, और कोई बात आप कह रहे हो, इफ समथिंग इज वर्थ सेइंग, इट इज वर्थ सेइंग वेल। तो इंस्पायर्ड, इफ समथिंग इज वर्थ डूइंग, इट इज वर्थ डूइंग वेल। अगर कुछ बात है जो अपने आप में जिसका बहुत मत जो अपने आप में ही बहुत ही गहरी, डीप और सटल बात है, तो उसको अच्छे तरीके से भी उसको बयान किया जा सकता है। तो वॉइस ओवर वही काम करता है। बहुत बढ़िया मैम। तो उससे मैं हमें जी, काफी अच्छी बातें कही। दैट्स इट। And we would like to continue this and want this to go on, and we hope that we get that chance and opportunity again to interact and learn more and more about you and your writing and everything that you do. And maybe next time when we meet, you have both your books with you and we have your books with you. So होपफुली होपफुली। yes, so एक final कुछ thought for the budding writers and then we can just wrap it up. हाँ, कि कोई भी चीज हो, चाहे राइटिंग हो, म्यूजिक हो, आपका मेन स्ट्रीम प्रोफेशन हो, उसके बहुत ज्यादा टेक्निकल नुआंसेस होते हैं। ऐसे गुणी लोगों के कनेक्शन में रहिए जो आपको टेक्निकल नुआंसेस हमेशा सिखाएंगे। लेकिन अ, एक सबसे जरूरी चीज होती है कि आप स्पॉन्टेनियसली अपने आप को एक्सप्रेस करो। कभी कभी एक पर्टिकुलर चीज पर्टिकुलर फॉर्मेट में होनी चाहिए, उससे से वो ज्यादा अच्छा लगता है, या उसी से वो अपीलिंग लगता है, या उसी फॉर्मेट में वो एक्सपेक्टेड है, तो हमें सीखना चाहिए, वो सब अच्छा है। लेकिन इस सब के चक्कर में अपना जो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है उसको कहीं मत रोकिए। उसको पहले स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो को एक्सप्रेस कर दीजिए, और फिर उस एक्सप्रेशन को उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में, उस टेक्निकल नुआंसेस में आप ढाल सकते हो। और कुछ वर्कशॉप्स हैं आजकल, कुछ कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स आपको मिलेंगी, कुछ सेमिनार्स होते होंगे। ज्योति झा जी जैसे लोग हैं जो आपको शायद नुआंसेस बताएंगे। जो लोग काम कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ आपको नुआंसेस जरूर बताएंगे। तो Thank उन you. लोगों के संगत में रहिए। लेकिन अगर आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो एक्सप्रेस करना बंद मत करिए। भले ही आपको दुनिया के सामने नहीं लाना है, शायद आपकी पर्सनल